uh, main speaker, keynote speaker for the today's 7-day workshop on research methodology. The today's topic for discussion is systematic review of literature. I am highly obliged to Madam Pratibha Goyal ji. She will be the speaker for the another day, but today's due to the certain casualty, Madam accepted my request and ready to give her lecture. I am highly again obliged. Madam Pratibha Goyal is senior professor and she is director since 2016. His area is human resource management. Research interest is organizational behavior, human resource management and marketing management. Besides various projects completed by the madam and various papers published in the international journals, she has the credit of 3 books. Her name, that is the stress management, life and stress, and knitting hands that work. Great time for us for the Mahatma Gandhi Kasi Vidyapeeth. I am welcoming Madam on behalf of the Department of Commerce as well as the Institute of Management Studies, Faculty of Commerce and Management Studies, Mahatma Gandhi Kasi Vidyapeeth. Today's keynote speaker. We hope our students will be benefited from your lecture, and whatever the feedback we will receive, we will share to you, madam. Again, thank you very much for sparing your valuable time for us. Please continue your lecture. Thanks, madam. Thank you, sir. Honorable faculty members and dear students, at the outset, I'm highly grateful to Professor Dr. K.S. Jaiswal, Head, Department of Commerce, Kashi Vidyapeeth, Varanasi, and his team for today giving me the opportunity to be a part of this training program on research methodology. And the topic given to me for today is systematic review of literature. So let's come to the topic. Review of literature is highly important in building up the background of the research work, in telling the gaps which are there in the previously existing body of knowledge, and it also highlights the need for the present study, and that's how it gives a theoretical background to whole of your work, and it justifies basically that why this research should be done and why at all it should be done in the way it is being carried out. Okay, I hope that the students are comfortable in English language. Yes. So, okay. So if they require from time to time, I can switch over to Hindi also for their convenience. But if English is okay, so we can continue just English like this. Is okay, but it will be good for you. Sometimes we use the mixed language. That will be okay for us. Right, sir. So review of literature, basically it is the survey of scholarly sources on specific topic. When you are doing some research, it may be for some degree, just like your MCOM. Sometimes some of the universities, even the postgraduate students are expected to do research, or it may be for your PhD degree, or it may be for writing a research paper, or it may be for the purpose of doing some research which is funded by funding agencies like UGC, ICSS,
and so on. So whatever is the nature of research, whatever is the purpose of research, for every research, you have to survey some scholarly resources which are relevant to that topic which you have taken up. So review of literature, it will provide an overview of the current knowledge. ये आपको क्या प्रदान करता है? ये आपको आपके टॉपिक के रिलेटेड जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है, करंट नॉलेज, जो काम उसके रिगार्डिंग पहले किया जा चुका है, उसके बारे में नॉलेज देता है. एंड ऑल्सो इट हेल्प्स यू to identify the relevant theories, methods, and all. Therefore, it highlights the gap. आपको ये पता लगता है रिव्यू ऑफ लिटरेचर के थ्रू कि इस फील्ड में क्या काम ऑलरेडी हो चुका है और क्या काम आगे होना चाहिए. पहले वालों ने कैसे रिसर्च की और मुझे कौन सी रिसर्च मेथोडोलॉजी अप्लाई करके आगे बढ़ना चाहिए ताकि मेरे ऑब्जेक्टिव्स के रिगार्डिंग मुझे रिजल्ट्स इसमें से अचीव हो जाएं. So, review of literature, it means writing the literature review, which involves relevant publications, relevant survey of publications. So, when you are doing review of literature, you will study some publications and you will study various books, various journals where you will study research articles, you will study them, you will evaluate them, you will critically analyze them, and then you will build up the relationship with one study and the other, and you will try out that what is the whole body of knowledge existing with respect to your topic. And this is, this is a systematic process. Now, this systematic process has got several steps. As I have listed down here, these steps are search for the relevant literature. सबसे पहले आप relevant literature को search करेंगे, फिर उन articles को पढ़ेंगे, books को पढ़ेंगे, जो आप various journals में जो आपको relevant papers, research papers मिलते हैं, आप उनको पढ़ेंगे, उनको evaluate करेंगे. You will identify that what the authors are trying to say there. You will identify the themes, debates, and the gaps. And then you will outline the structure of the body of knowledge. आप step by step ये evaluate करेंगे कि ये study ऐसे start हुई इस area में. This person has been the pioneer one. इसने सबसे पहले research की, सबसे पहले जब research हुई तब ये find out किया गया. फिर further इसके और relevant aspects पे study करके हम अब यहाँ तक पहुँचे हैं और इससे आगे मेरी research इस knowledge को इस तरह से आगे बढ़ाने की कोशिश करेगी. And you write about all these things. This is known as review of literature. Now, as a researcher, your endeavor is to do good review of literature. जब आप thesis लिख रहे हैं, एक project report जब लिखी जाती है, उस project report को कई नाम दिए जा सकते हैं. Project report can be called a thesis, it can be called a dissertation, or it can be called a research report. So when you are writing your research report or thesis or dissertation, you have to write a separate chapter. First chapter will be your introduction. And after introduction, I will take it up separately in the next lecture also when we are meeting again on 11th. Generally, second chapter deals with review of literature. So this second chapter, which is review of literature, it should be written very well. You should be able to do very good review of literature. And what do we mean by good review of literature? It means analyzing, synthesizing, and critically evaluating the available knowledge so as to give a clear picture of the state of knowledge on the subject. You take any topic of your research. It's not that you are the only one, you are the first one who is doing research in that area. See, commerce is such an old subject, management is also a pretty long subject. And also these subjects have borrowed from other fields of knowledge, for example, economics, sociology, anthropology, psychology, and so on. So full-fledged body of knowledge exists there. Many researchers, many authors, they've already contributed to that area. So whatever topic you take,
lot of work has been done on that, on the relevant field. It may not be specifically लेकिन कुछ ना कुछ नॉलेज पहले एग्जिस्ट करती है। जो कौन सी नॉलेज, कितनी नॉलेज, किस टाइप की नॉलेज पहले एग्जिस्ट करती है, कौन सी थ्योरीज हैं, कौन से मॉडल्स हैं, कौन सी प्रैक्टिसेस हैं, ये सारी नॉलेज को एनालाइज करना, उसको सिंथेसाइज करना, उसका आपस में तालमेल बिठाना और फिर क्रिटिकली इवेल्युएट करना कि कैसे ये स्टार्ट हुआ, इस फील्ड में किस किस एस्पेक्ट पे ऑलरेडी स्टडी हुई है, उस सारे को एनालाइज करना और उसको एक क्लियरली राइट अप उसके बारे में बनाना, दैट इज नोन एज ए गुड रिव्यू ऑफ लिटरेचर। सो सम ऑफ द क्वालिटीज ऑफ a good review of literature is that it places your research within the existing knowledge. ये आप जो टॉपिक ले रहे हैं वो टॉपिक एग्जिस्टिंग नॉलेज में कहाँ प्लेस होता है, उसकी राइट प्लेसमेंट डिसाइड करता है कि इतना काम हो चुका है, ये मेरा काम है। सो इट इज द प्लेसमेंट के मेथड्स हैं, किसी किसी सपोज योर अकाउंटिंग मेथड, सो सेवरल researches have been done on accounting methods earlier, or village industries for example. So many researchers, they have already done research on village industries. So village industries growth के ऊपर काम हुआ है, village industries की जो प्री इंडिपेंडेंस ग्रोथ पे काम हुआ है, पोस्ट इंडिपेंडेंस पे काम हुआ है, इसकी ग्रोथ के फैक्टर्स कौन कौन से हैं, ग्रोथ का रेट क्या रहा है, उसके ऊपर काम हुए हैं। सेवरल ऑब्जेक्टिव्स हैव बीन टेकन। सो कौन कितना काम पहले हो चुका है और क्या काम आप आगे करना चाहते हैं, तो आपकी रिसर्च कहाँ पे प्लेस होती है। सो इट इज द राइट प्लेसमेंट, इट हेल्प्स यू इन प्लेसिंग योर रिसर्च at the right point. That is the role of good review of literature. And also it helps you in demonstrating your familiarity with the topic. जो भी रीडर है या जो भी आपका इवेल्युएटर है, आफ्टर ऑल योर थीसिस इज गोइंग टू बी इवेल्युएटेड बाय समवन, तो आपका एग्जामिनर है या आपका रीडर ही है, वो पता चलाना चाहता है कि आपकी नॉलेज कहाँ तक इस फील्ड को आगे बढ़ाती है। सो इवेल्युएटर्स, in front of them, your review chapter, it will demonstrate that how familiar you are with the body of knowledge pertaining to that topic. And also it helps in developing a theoretical framework and methodology for the research. आप बताएंगे कि आपको अगर विलेज इंडस्ट्रीज का ग्रोथ रेट स्टडी करना, ये आपका ऑब्जेक्टिव है, तो इसके रिगार्डिंग ये ग्रोथ रेट्स कई तरीकों से पहले स्टडी किया गया हो सकता है। किसी ने कोई एक मेथड, स्टैटिस्टिकल मेथड लगाया, लेकिन उसने भी ग्रोथ रेट ही स्टडी किया था। आप ग्रोथ रेट स्टडी करना चाहते हैं, लेकिन आप कोई दूसरा स्टैटिस्टिकल मेथड अप्लाई करके उसका ये आंसर निकालना चाहते हैं। पहले किसी ने ग्रोथ रेट इंडिया की विलेज इंडस्ट्रीज का किया था, लेकिन आप सिर्फ यूपी की विलेज इंडस्ट्रीज का ग्रोथ रेट निकालना चाहते हैं, तो उसमें एक राइट थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क बनेगा रिव्यू ऑफ लिटरेचर से, और कौन सी मेथोडोलॉजी अडॉप्ट करना अप्रोप्रिएट है, ये भी आपका उसी से आंसर निकलेगा। And it helps in positioning yourself in relation to other researchers and theorists, and also it helps in showing how your research addresses the gap or contributes to the debate. So you might also have to write review of literature as a stand-alone assignment. So what does it mean? एक तो है थीसिस के अंदर आपने चैप्टर 2 लिखना है, chapter number 2, which is review of literature. It will fulfill that job. And another thing is that sometimes you can write a research paper which is review based only. For such research papers, you are not collecting any primary data. आप कहीं फील्ड सर्वे करने नहीं जाते हैं, लेकिन आपको ये एक ऐसी प्रॉब्लम, फॉर एग्जाम्पल इट कैन बी द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया. So unemployment in India, it has been dealt with by several researchers. There are several agencies which are continuing data collection on this area. CMI, Center for Monitoring Indian Economy है, CMIE, वो unemployment पे
कंटिन्यूअसली डाटा कलेक्ट करती रहती है, इवेल्युएट करती रहती है, उसको अपडेट करती रहती है। तो अगर आप अनएम्प्लॉयमेंट, द फैक्टर्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, द रिलेवेंट फैक्टर्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका ये रिसर्च टॉपिक है और ये रिव्यू ऑफ लिटरेचर बेस्ड आप एक पेपर लिख सकते हैं। सो उस पेपर में और कुछ नहीं होगा, खाली उसके अंदर आपका रिव्यू ऑफ लिटरेचर होगा। आप उसमें डील करेंगे कि व्हाट इज अनएम्प्लॉयमेंट, how various researchers have conducted research with respect to the factors or extent of unemployment. इस unemployment के extent को study करने के लिए कौन कौन से methods apply किए गए हैं, कैसे एक दूसरा method पहले method की बजाय ज्यादा डेवलप्ड मेथड था, कौन सा मेथड लिमिटेशंस ज्यादा रखता है, कौन से मेथड के प्लस पॉइंट्स ज्यादा हैं, आपका क्या व्यू पॉइंट है उसके बारे में. सो दिस इज the review paper you can write, and sometimes review papers, they are the best papers, I tell you. So the purpose may be any. Purpose may be writing a separate chapter related to review of literature for the purpose of your thesis, या आप एक separate review paper भी लिख सकते हैं. So in case you are writing a review paper, the purpose is to evaluate the current state of research and demonstrate your knowledge of scholarly debates around the topic. And then you will draw the conclusion out of the review of literature only. So the content will look slightly different in this case, in case it is a research paper based on review. But the purpose of conducting a review will follow the same steps as I told you earlier, and as in the preceding slides, I will be dealing with those steps in detail. So what are the steps of writing a review? First step is search for relevant literature. अब आपने एक टॉपिक चूज कर लिया, उस टॉपिक को चूज करने के बाद आपको स्टार्ट करना है. आप कहते हैं कि मुझे सर्विस क्वालिटी पे एक रिसर्च करनी है, सर्विस क्वालिटी, और दूसरी तरफ है कस्टमर लॉयल्टी. ओके, अगर एम्प्लॉयज सर्विस क्वालिटी रखते हैं, अगर किसी कंपनी में या किसी ऑर्गेनाइजेशन में सर्विस की क्वालिटी अच्छी है, तो क्या कस्टमर आपकी कंपनी के प्रति लॉयल होते हैं? So you want to study the effect of the implication of or impact of service quality on customer loyalty. Okay, आप ऐसे ही आपने कुछ थोड़ा बहुत पढ़ा, उसके बेसिस पे आप में एक जिज्ञासा जागी, तो उसके बेसिस पे आपने सोचा कि मुझे सर्विस क्वालिटी पे काम करना है. सर्विस क्वालिटी पे क्या काम करना है कि मैं देखना चाहती हूँ कि सर्विस क्वालिटी का कस्टमर लॉयल्टी पे कोई असर पड़ता है. जहां सर्विस क्वालिटी अच्छी है वहां कस्टमर ज्यादा लॉयल होते हैं या नहीं होते. ओके, देन you only have this question in front of you. You have decided about the topic maybe, but you have not finally framed your topic yet. उसके लिए क्या जरूरी है? आप लिटरेचर स्टडी करेंगे, आप बहुत सारे रिसर्च पेपर स्टडी करेंगे, आप बुक्स स्टडी करेंगे, में आपको सर्विस क्वालिटी के बारे में पता चलेगा, आप कस्टमर लॉयल्टी के बारे में स्टडी करेंगे. आप ये स्टडी करेंगे कि क्या कुछ राइटर्स ने पहले इन दोनों वेरिएबल्स का आपस में कोई क्या कनेक्शन है, किस टाइप का रिलेशनशिप है, इसको स्टडी करने के लिए कुछ किया है. देन you will study literature, you will review literature, and it will start from here. And from here, from the review of literature, you will be able to fine tune not only your topic, but also the objectives of your study. Okay, so review of literature, it will start from your topic. आपने एक एरिया चूज किया, एक ब्रॉड टॉपिक आपने चूज कर लिया, उसके बेसिस पे आप रिव्यू ऑफ लिटरेचर करने लग गए, आपने स्टार्ट कर दिया, आपने पढ़ना स्टार्ट कर दिया, बहुत सारी बुक्स पढ़ी, बहुत सारे रिसर्च पेपर्स पढ़े. लेकिन वो रिसर्च पेपर्स और बुक्स पढ़ के आपको लगता है कि आपने जो टॉपिक लिया था ना, उसमें ये दो चीजें और ऐड हो जाएं तो मेरी रिसर्च ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूट करेगी. इतना काम तो ऑलरेडी हो चुका, लेकिन अगर मैं इसमें एक अंदर ये चीज और ऐड कर लूं
तो मेरी रिसर्च है जो ये पाइनियर रिसर्च हो जाएगी, ये नए किस्म का काम हो जाएगा. So topic will help in review of literature, and review of literature will further help in fine tuning your topic, and not only topic but also the objectives of your study, which will further review से आपको topic मिला, topic से आपको objectives मिले, टॉपिक और ऑब्जेक्टिव्स इन दोनों को मिला के फर्दर जो आपने रिसर्च कैरी ऑन करनी है उसके लिए फर्दर रिव्यू ऑफ लिटरेचर इज हेल्प बाय दीज. सो दीज आर रीइंफोर्सिंग. रिव्यू हेल्प्स टॉपिक फाइनलाइजेशन, टॉपिक एंड ऑब्जेक्टिव्स दे हेल्प again in review of literature. So the first step is search for relevant literature. So before you begin searching for literature, clearly define the topic. And once you are fine with your topic, once you have decided your topic, search for literature related to your research topic and objectives. For literature review as a stand-alone assignment, choose a focus. What is stand-alone assignment? Stand-alone assignment is that you are just reviewing the literature, then you are not later on doing some primary study, you are not writing a big thesis on that basis, you are just writing a review paper. So your focus has to be on the central question to direct your research. So unlike a dissertation and the research question, this question has to be answerable without collecting the original or the primary data. So you should be able to answer it based on just the review of literature. Then once you are clear about your topic, objectives, and you have reviewed your literature also, you have again revisited your objectives and topic, you should be able to make a list of your keywords. For example, I told you customer service, impact of customer service on customer loyalty. And here the keywords are customer service. And service quality can be another word, keyword. Another keyword is customer loyalty. So you will have to search for literature. You will have to search for various articles depending upon these keywords. So you have to you have to create a list of keywords related to your research question, and you can include each of the key concepts or variables you are interested in and list any synonymous or the related terms. Then you can add this to the list if you discover new keywords in the process of your literature. For example, this is example I've taken. The title is Employee Job Satisfaction and Service Quality in Organized Retail Stores of Punjab. Okay, so this is the research which was conducted under my supervision. Here, what the researcher was interested in, the researcher was interested in service quality primarily. Then she did review of literature, and then she found that service quality comes from job satisfaction maybe. एक जो संतुष्ट, एक खुश एम्प्लॉई है, एक एम्प्लॉई जिसकी अपनी जॉब के प्रति पूरी संतुष्टि है, उसकी सेटिस्फैक्शन है, वो काम करते हुए खुश महसूस करता है, शायद ऐसा एम्प्लॉई ही सर्विस क्वालिटी डिलीवर कर सकता है. एक क्वालिटी सर्विस कहाँ से आ सकती है? क्वालिटी सर्विस जॉब सेटिस्फैक्शन से आती है. Job satisfaction leads to service quality, and maybe service quality will lead to customer loyalty. So these three things were linked up in this research. So if this is the title, then your keywords can be job satisfaction. Another keyword can be service quality. Another keyword can be organized retail. Another keyword can be customer loyalty, and so on. It depends upon your topic, and it also depends upon the specific objectives of your study that you will decide about the keywords. Now, from where to search for the information? पुराने ज़माने में तो libraries ही एक source होता था. हम लोग जब research करते थे, we used to visit our university library.
तो यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी अगर बहुत ज्यादा सफिशिएंट नहीं होती थी, और कोई भी यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी अकेले सफिशिएंट नहीं होती थी, देन वी यूज टू गो टू द यूनिवर्सिटीज ऑल अराउंड, हमारे आसपास की नेबरिंग एरियाज की, हमारी अपनी स्टेट की यूनिवर्सिटीज, जहाँ पे कुछ और ज्यादा जर्नल्स ऐसे आते थे जो हमारे लाइब्रेरी में नहीं थे, तो हम ऐसी जगह पे विजिट करते थे. And if the state universities libraries were not sufficient, we used to go to ICSSR New Delhi. ICSSR की लाइब्रेरी में जाके स्टडी करते थे, वहां पे देखते थे कौन से जर्नल्स, कौन से थीसिस अवेलेबल हैं. फिर रतन टाटा लाइब्रेरी फॉर एग्जांपल, देन टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज की लाइब्रेरी. सो हमारे टाइम में एक लाइब्रेरीज का ही सोर्स होता था, जहाँ पे हमें जर्नल्स मिलते थे और बुक्स मिलती थी. हम वहां पे फिजिकली वो जो हार्ड कॉपीज उनकी होती थी वो ही स्टडी कर पाते थे. बट थैंक्स टू दिस टेक्नोलॉजी दीज डेज, online sources are available these days. So online sources can be, apart from your own library sources, it can be Google Scholar, JSTOR, Ebesco, Project Muse, Medline, Econlit, Inspect, and so many. Okay, so many libraries, they have subscription to these e-sources, and if you go through these Google Scholar or JSTOR, etc., you can online have an online access to various journals, and you can open the research papers there, full research papers you can study, you can download the research papers, and you can do the review of literature like that. Now, what will you do? Mostly you will say, go to Google and you will type the keywords. For example, your keyword can be service quality. Okay, so you will type service quality dash, you will write research paper and you will search that. And several research papers will open there. And if your library has subscribed to sufficient number of sources, then full papers will be available. Otherwise, the option of buying those online papers is there. But if you are unable to buy those papers, the full text of those papers, then at least you can go through the abstracts. And sometimes lot of clue is available just in the abstract only. So you can note down about the topic, about the objective, about the methodology, and the main findings from the abstract itself. Then you can fine tune your search. You can, with the help of some use Boolean, you can use Boolean operators. So Boolean operators, they are, for example, you can write job satisfaction and. So by putting and, job satisfaction and service quality, for example, I've shown here, and is a Boolean operator. So if you write job satisfaction and service quality, then all those articles which deal with job satisfaction and service quality, they will open. So that's how you can study those articles. Sometimes you can put or. So it can be service quality or customer delights. So in that case, maybe you are saying that service quality is just the customer delight. What does it mean? कि service quality अगर वहां पे जहां पे होगी, वहां पे कस्टमर डिलाइट है कि कस्टमर खुश होगा, सर्विस क्वालिटी होने से कस्टमर को खुशी होती है कि नहीं. अगर आप ये स्टडी करना चाहते हैं तो कस्टमर डिलाइट और सर्विस क्वालिटी, कि मुझे जहां पे सर्विस क्वालिटी है और कस्टमर डिलाइट की बात की गई है, ऐसे पेपर्स मेरे लिए खोल दीजिए. सो यू विल गिव दिस कमांड टू गूगल. देन यू कैन गिव द कमांड in terms of not. This can be, for example, I'm searching for apple, which is not fruit. So you can write apple, not fruit. So in this way, you can search for the relevant literature. And as I told you earlier, you can read the abstracts. Mostly abstracts are available. Full texts, constraint is there due to financial constraints with the universities. Mostly we are not subscribing to those e-sources.
because they are very costly sources. So therefore, you have to do with the abstracts only. So you can read the abstract to find out whether the article is relevant to your question. If you find that abstract is relevant, you can access the full PDF file if it opens, or you can take the notes from abstract only. So you can identify most important publications on your topic and take note of recurring citations. Try to find out that what is the citation count. Citation count is available on the Google Scholar. तो ऐसे आर्टिकल्स जिनका साइटेशन काउंट बहुत ज्यादा है, वो आपके एरिया में बहुत इम्पोर्टेंट आर्टिकल होंगे। तो ऐसे आर्टिकल्स को आप अपने रिव्यू में इंक्लूड करना नहीं भूलिएगा। So the second step is to evaluate and select the sources. So you can't read everything available with respect to the topic which you have taken. So you need to be selective. So while being select, you can ask yourself some of the questions. These questions will be that what question or problem the author is addressing. जो आर्टिकल है, जो आपने एक आर्टिकल आपके सामने खुल गया है, एक एब्स्ट्रैक्ट आपके सामने खुला हुआ है, आप उसमें क्या स्टडी करेंगे, कैसे उसको रिजेक्ट या एक्सेप्ट करेंगे, आपने अपने रिव्यू में उसको रखना है या उसको रिजेक्ट कर देना है, नहीं रखना है या रखना है, ये कुछ उसके लिए आपको अपने आप से कुछ सवाल पूछने चाहिए। तो ये सवाल हैं, व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन और द प्रॉब्लम इज बीइंग एड्रेस्ड, मेरे रिगार्डिंग, मेरे रेलेवेंट, मेरे टॉपिक के रेलेवेंट इसकी रिसर्च है या नहीं, जो ये प्रॉब्लम को डील कर रहा है वो मेरे लिए रेलेवेंट है कि नहीं, what are the key concepts and how they are defined, then what are the key theories or the models or methods this person has taken up, इसने रिसर्च की है, इसने कौन सा मॉडल, कौन सा मेथड अप्लाई करके किया है, कौन सा स्टैटिस्टिकल टूल अप्लाई किया, कौन सा मॉडल अप्लाई किया है। So does this research use established framework or take an innovative approach? इसने अपना एक नया तरीका अपनाया है, नया मॉडल अप्लाई किया है, या एग्जिस्टिंग मॉडल्स में से कोई एक मॉडल पिकअप करके फिर इसने रिसर्च कंडक्ट की है। व्हाट आर द रिजल्ट्स और कंक्लूजन्स ऑफ दिस स्टडी, हाउ डज दिस पब्लिकेशन कंट्रीब्यूट टू योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक। आप जो ये रिव्यू कर रहे हैं या जो बुक पढ़ रहे हैं, जो आर्टिकल पढ़ रहे हैं, ये आपकी नॉलेज को कैसे एनहांस करता है, आपको कैसे इंसाइट प्रोवाइड करता है, आपको क्या क्लू प्रोवाइड करता है, इस रिसर्च की क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, इस रिसर्च ने क्या नई बात बताई है, या कहाँ तक ये रिसर्च फेल हुई है इस क्वेश्चन को आंसर करने में। तो ये सारी चीजें आपको क्रिटिकली इवेल्युएट करनी है। Now, when you are searching for information, make sure that the sources you use, they are credible. वो ऑथेंटिक सोर्सेज होने चाहिए, और आपको लैंडमार्क स्टडीज जरूर देखनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर डीलिंग विद सर्विस क्वालिटी, द लैंडमार्क स्टडीज दे आर डन बाय जिथमल। इन आपके आपने जो भी टॉपिक लिया है, for example, if you are doing on emotional intelligence, then I think Goldman is the author who has been pioneer in that area. हॉपॉक की स्टडीज जॉब सेटिस्फैक्शन के लिए पाइनियर वर्क हैं। तो आप जो स्टडी कर रहे हैं उसमें कौन से ऐसे रिसर्चर्स हैं जो बहुत मार्के के, जो बहुत इम्पॉर्टेंट रिसर्चेस मानी जाती हैं उस फील्ड में, तो ऐसे रिसर्चेस को आप अपने रिव्यू में इंक्लूड करना मत भूलिए, उनको इंक्लूड करना बहुत जरूरी है। अदरवाइज ये माना जाएगा कि आपको अपने एरिया में जो मेजर रिसर्चेस हुई हैं उसके बारे में ही नॉलेज नहीं है, तो आपने अपना रिसर्च वर्क क्या अच्छा किया होगा, ऐसा आपके बारे में परसेप्शन बन सकती है। तो इसलिए आपके एरिया में जो बहुत अच्छी, जिनके हाई साइटेशन काउंट हैं, ऐसी रिसर्चेस को आप इंक्लूड करना नहीं भूलिए। द स्कोप ऑफ योर रिव्यू विल डिपेंड अपॉन योर टॉपिक एंड द डिसिप्लिन। यू माइट टेक ए लॉन्ग हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑल्सो। आप कोई रिसर्च करने जा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल ट्रेड यूनियन मूवमेंट, you can say that in the wake of globalization, the role of trade unions.
तो ये आप जब ट्रेड यूनियंस की स्टडी करने जा रहे हैं तो पूरे वर्ल्ड लेवल पे ट्रेड यूनियंस कैसे स्टार्ट हुई, वो ट्रेड यूनियंस कहाँ पे ज्यादा प्रोग्रेसिव हुई, ट्रेड यूनियंस ने अपने पैर कैसे जमाए, ट्रेड यूनियंस इंडिया में कैसे आई, ट्रेड यूनियंस को रिकॉग्निशन कैसे मिलनी शुरू हुई, इसके रिगार्डिंग कैसे लॉ बनना शुरू बना, और कैसे उस लॉ ने इस ट्रेड यूनियंस को कुछ बेसिक राइट्स प्रोवाइड किए, ये सारी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी आपके रिव्यू ऑफ लिटरेचर में आ जानी चाहिए, सो यू विल नॉट फॉरगेट अबाउट इट. Then, when you are doing review of literature, you will take certain notes. Make a point that you will keep making your notes side by side. जब भी आप कुछ स्टडी कर रहे हैं, आप इमीडिएटली उसके नोट्स बनाएंगे. अदरवाइज जो आर्टिकल आपने आज स्टडी किया, उसमें स्टडी करने के बाद आपको क्या महसूस हुआ, आपने क्या उसमें से कंक्लूजन निकाला कि ये रिसर्च रेलिवेंट है या नहीं है, इसमें मेजर फाइंडिंग्स क्या आई, इस ऑथर ने, इस रिसर्चर ने कौन सी मेथोडोलॉजी अप्लाई की थी, वो मेथोडोलॉजी सही थी या नहीं थी, कैसे इसने एग्जिस्टिंग नॉलेज को आगे बढ़ाया, ये सारी चीजें आपको कुछ टाइम के बाद भूल जाएंगी. जैसे आज आप रिव्यू स्टार्ट कर रहे हैं, आपको 1 साल बाद, 1.5 साल बाद जब आप अपना अपना थीसिस लिखना है, उस टाइम अगर आप सोचेंगे कि आपने क्या क्या स्टडी किया था, कौन कौन सी बुक पढ़ी थी, कौन कौन सा रिसर्च आर्टिकल स्टडी किया था, ये आपको उस टाइम तक भूल जाने वाला है. सो दैट यू डोंट स्टॉप, डोंट फॉरगेट, कीप ऑन मेकिंग योर नोट्स साइड बाय साइड. आप एक आर्टिकल पढ़ते हैं, उस आर्टिकल को पढ़ के आप नोट्स बनाएंगे, अपने ब्रीफ नोट्स बनाएंगे. वो नोट्स में आप उस आर्टिकल का हेडिंग, टाइटल नोट करेंगे, उसके ऑथर नोट करेंगे, वो कहाँ पब्लिश हुआ, उसका वॉल्यूम नंबर, पेज नंबर, ये नोट करेंगे, उसने किस ऑब्जेक्टिव के साथ ये रिसर्च की, कौन सा मेथड अप्लाई किया, कहाँ से उसने डाटा कलेक्ट किया, कैसे उसकी रिसर्च प्रीवियस रिसर्च से एक स्टेप आगे थी, और क्या क्या मेन फाइंडिंग्स उसकी आई. आप उस फाइंडिंग्स को प्रीवियस और दूसरी रिसर्चेस के साथ कैसे रिलेट करते हैं. आप सपोज कहते हैं कि सिंह ने जो रिसर्च की, वो दूसरी रिसर्चेस के साथ कैसे उसके साथ एग्री करती थी या डिसएग्री करती थी, ये सारी चीजों का आप एक ब्रीफ नोट बनाते हुए चलेंगे. सो माय सजेशन इज टू कीप ए सेपरेट नोटबुक. On that notebook you can keep on writing, keep on making your brief notes, and if you can write, it's well and good, but otherwise you can keep on creating files in your say laptop or computer, where mode can be any. तो आप अपने लैपटॉप में नोट्स बना सकते हैं, आप अपने नोटबुक के ऊपर नोट्स बना सकते हैं, बट टेकिंग नोट्स and writing down the citations, that is very important. So as you read, you should be able to begin the जब आप लिखते हैं तभी आपका राइटिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, और इसी राइटिंग से आपके थीसिस का ये चैप्टर निकलने वाला है. सो टेक नोट्स दैट यू कैन लेटर ऑन इनकॉर्पोरेट. इसी को आप बाद में अपने थीसिस में इनकॉर्पोरेट करेंगे. सो इट इज इंपॉर्टेंट टू कीप ए ट्रैक ऑफ योर सोर्सेज विद साइटेशन टू अवॉइड प्लेजरिज्म. अगर आप बिना नोट किए, कई कई बार ये हो सकता है कि आपने कहीं नोट किया, आपने लिख तो लिया कि ये मॉडल है या ये फाइंडिंग है, लेकिन अगर आपने उसको सोर्स को साइट नहीं किया, आपने एक्नॉलेज नहीं किया, और ऐसे ही आपके थीसिस में वो चला गया या रिसर्च पेपर में चला गया, सो इट कैन बी ए सीरियस प्लेजरिज्म इशू. So always acknowledge if you are taking, if you are borrowing some idea from somewhere, acknowledge it. Once you acknowledge, it's no plagiarism issue. Otherwise, it will be serious issue. So notes can be helpful in making annotated bibliography. So what is annotated bibliography? आपने एक आर्टिकल स्टडी किया, आप उसका एक रेफरेंस नोट करेंगे. सारा आप नोट करेंगे कि ये आर्टिकल मुझे किसने लिखा, कौन से साल में लिखा, कौन सा टॉपिक था, कहाँ पब्लिश हुआ, उसका वॉल्यूम क्या था, नंबर क्या था, पेजेस क्या थे. और ये एनोटेटेड बिब्लियोग्राफी वो होती है जहां पे आप एक ब्रीफ नोट भी साथ में लिखते हैं, जहां आप लिखते हैं कि ये रिसर्च ने ये फाइंड किया, ये ऑथर ये कहना चाहता है अपने पेपर के अंदर, और ये पेपर में जो ये रिसर्चर कहना चाहता है
वो दूसरे ऑथर से किस तरह से एग्री या डिसएग्री करता है, वो दूसरे ऑथर की रिसर्च से किस तरह से अलग है या सेम है. So that is annotated bibliography. Annotated bibliography, once if you study later on, it will bring all the things back into your memory, and you do not have chances of forgetting on valuable information which you have already studied, on which you have already spent a lot of time previously. So this is the role of annotated bibliography, which is very important. Step 3 of writing the review of literature is, or conducting the review of literature is, identify the themes, debates and gaps. जब आप रिव्यू करेंगे, बहुत सारे आर्टिकल स्टडी कर रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप आप ये स्टडी करेंगे कि ट्रेंड क्या है जो ये रिसर्चेस हो रही हैं. मैंने 20 रिसर्च आर्टिकल स्टडी किए. ये 20 रिसर्च आर्टिकल्स जब स्टडी करते हैं तो क्या ट्रेंड बन रहा है. ये ट्रेंड शो करता है कि सारे के सारे सपोज ये कह रहे हैं कि अगर जॉब सेटिस्फेक्शन इंक्रीज होती है तो प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज होती है. मैंने 20 पेपर पढ़े. I studied 20 papers which were related to the relationship of job satisfaction with productivity. And in 15 papers, I found that there is a positive correlation. जब जॉब सेटिस्फेक्शन बढ़ती है तो प्रोडक्टिविटी, एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी भी बढ़ जाती है. लेकिन कुछ एक ऐसे आर्टिकल्स हैं जो मुझे कहते हैं कि प्रोडक्टिविटी बढ़ती तो है, लेकिन प्रोडक्टिविटी जो है, सिर्फ जॉब सेटिस्फेक्शन ही एक पैरामीटर नहीं है जो प्रोडक्टिविटी डिसाइड करेगा. देयर आर सेवरल अदर पैरामीटर्स. नाउ दीज सेवरल अदर पैरामीटर्स मे बी any other, these may be working conditions, these may be family conditions, work life balance, etc. You are perfectly fine with your job but your family life is not good, then again your productivity may come down. So आप उसका ट्रेंड, पैटर्न, थ्योरी, मेथड, रिजल्ट ये सारा जब स्टडी करते हैं तो आप ये फाइंड आउट करते हैं कि इस रिसर्च का क्या पैटर्न चल रहा है, क्या उसका ट्रेंड चल रहा है. You are able to find out the themes, you are able to finalize you are able to evaluate debate कि डिबेट क्या चल रही है. कोई कहता है कि नहीं जॉब सेटिस्फेक्शन से प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, कोई कहता है नहीं नहीं बढ़ती बढ़ती कुछ नहीं है, प्रोडक्टिविटी के इस ऊपर इसका कोई असर नहीं है. कोई और है कि वो कह सकता है कि नहीं जॉब सेटिस्फेक्शन बढ़ने से बल्कि प्रोडक्टिविटी डाउन आ जाती है. कोई कहता है कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन अच्छे होने से प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है. कोई कहेगा कि नहीं रिलेशन अच्छे होते हैं तो रिलेशन का ही ख्याल रखा जाता है, उससे प्रोडक्टिविटी तो बल्कि डाउन आ जाती है, लोग रिलेशन की तरफ ही लग जाते हैं, लोग आपस में गॉसिप की तरफ बढ़ जाते हैं, तो वो प्रोडक्टिविटी की तरफ ध्यान नहीं दे पाते. So there are several debates, there are conflicting results, there are contradictions. You are able to find out all these aspects once you study that literature. So you are able to find out that what are the pivotal publications. कौन सी ऐसी publications हैं जिन्होंने इस एरिया के अंदर एक ट्विस्ट दिया, एक थिंकिंग को टर्न दे दिया. ओके, फॉर एग्जाम्पल द वर्क्स ऑफ एल्टन मेयो. पहले तो टेलर कह रहा था कि साइंटिफिक मैनेजमेंट ही अच्छी है, वो कहता था कि आप एक्स्ट्रा पैसे दो लोग एक्स्ट्रा काम करना शुरू कर देंगे. ही हैड इकोनॉमिक मैन थ्योरी assumption, so he believed in economic man theory. Then Mayo came, his researches, his experiments, they told us that no, money is not the only thing. It's not working conditions which are solely important. Apart from working conditions, these social relations are important. तो कैसे उसने मैनेजमेंट थॉट को ही चेंज कर दिया. सो व्हाट आर द पिवटल पब्लिकेशंस. कौन सी ऐसी पब्लिकेशंस हैं जिसने एक पहले एक ढर्रे की थिंकिंग ही चल रही थी, लेकिन उस थिंकिंग को एक ऐसा टर्न दिया कि पूरी एप्लीकेशन ही बदल गई, पूरा एक व्यू पॉइंट ही बदल गया. देन यू आर एबल टू हाईलाइट द गैप where you will find that up to this point the research has already been done, but this is the area which is still dark, and this is what I would like to put light on, throw light on in this area. So the fourth step is outline your literature review structure.
you will have to make the structure of your review. With the help of one example, I will show you later on also how to structure your review chapter. तो बेसिकली आप इस स्ट्रक्चर में क्या करेंगे, आप पहले बताएंगे कि आपने अपने टॉपिक के रिलेटेड कौन कौन से कीवर्ड्स लिए हैं. फॉर एग्जांपल, द एज आई टोल्ड यू, job satisfaction and its implications for service quality and customer loyalty. तो आप रिव्यू करेंगे जॉब सेटिस्फैक्शन के बारे में, आप रिव्यू करेंगे रिसर्च विच हैज बीन डन इन द एरिया ऑफ सर्विस क्वालिटी, and you will review literature which is pertaining to customer loyalty, and again you will do review which pertains to the relationship between job satisfaction and service quality, the relationship between job satisfaction and customer loyalty, and the relationship between customer loyalty and service quality, and so on. So आपके थीम या आपके टॉपिक और आपके ऑब्जेक्टिव्स के रिलेटेड कौन कौन से ऐसे थीम्स हैं जिसके ऊपर आपको लिटरेचर स्टडी करना है, दैट विल make the subsections of your chapter. Now, this can be done when you are writing this chapter of review of literature. You can do chronological layout. आप जब ये चैप्टर लिख रहे हैं, जब आपने बहुत सारी रिसर्चेस रिव्यू की हैं, उनको जब आपने अपने चैप्टर के अंदर नोट डाउन करना है, it can be done in the chronological order. Chronological approach is, it's a very simple approach where you write that maybe in this area the research started in 1850. तो 1850 में जो रिसर्च हुई वो ये थी, 1910 में ये रिसर्च हुई, उसके बाद कोई रिसर्च है जो 1947 में हुई, आप उसको लिख देंगे. फिर आप उसके बाद लिखेंगे कि 2001 में ये हुआ, 2002 में ये रिसर्च हुई. तो ईयर वाइज जब आप लिखते जाते हैं उसको हम क्रोनोलॉजिकल layout कहते हैं. So this is the simplest approach to trace the development of but just the chronological sequencing of the researches will not be sufficient. You will make use of the combination. एक chronological है, दूसरा है thematic. आप themes लीजिए. थीम फॉर एग्जाम्पल कस्टमर सर्विस, कस्टमर सर्विस के रिगार्डिंग जितनी भी रिसर्च हुई है आप उसको रिव्यू करो और उसको अपने चैप्टर में एक सेक्शन बना के आप लिख देंगे. तो एक तो तरीका हो सकता है कि आप ईयर वाइज लिखते चलें, दूसरा तरीका ये हो सकता है आप थीम वाइज लिखते चलें. सर्विस क्वालिटी का पहले लिख दिया, फिर जॉब सेटिस्फेक्शन के रिगार्डिंग हुई है उसको लिख दिया, फिर कस्टमर लॉयल्टी के रिगार्डिंग हुई है उसको लिख दिया. But it can be a combination of the two also. Combination of the two can be where you are taking the theme. आप for example customer service आपने थीम लिया, आप एक हेडिंग बना के चले कस्टमर सर्विस, और उस कस्टमर सर्विस के अंडर आप एक पैरा, ओपनिंग पैरा आप लिखेंगे कि several researches have been done in the area of customer service. And the pioneer in this field was Ziethmal. This research was done, it started maybe from 1972. I'm just, for example, I'm saying. So in 72, this was done. Later on, the area developed in this way. And again, a very important research was done in 1980. Then chronologically, you can do within that theme. So understand, one can be just the chronological. Some universities, they encourage the chronological writing, and some universities, they encourage thematic writing, but it can be a combination of the two. That is better way of putting it down, that you take a thematic view first of all, and within that theme, how this idea has chronologically developed, you can keep on writing that. Then step 5 is write your literature review. You have made so many notes, you have created so many computer files, and you have clear idea. आपको बहुत
पढ़ के जितना पढ़ते हैं उतना क्लैरिटी होती है, उतना हम एक रिसर्च को दूसरी रिसर्च के साथ रिलेट कर पाते हैं, हमारा क्लियर विजन क्लियर हो जाता है, हमारे दिमाग में बहुत एक क्लियर आइडिया बन जाता है कि ये रिसर्च इस एरिया के अंदर इस तरह से काम शुरू हुआ, इस तरह से ये नॉलेज आगे बढ़ी, इस जो वेरिएबल्स के ये फैक्टर्स हैं, तो आपको बहुत सारी नॉलेज क्लियर हो जाती है। देन देर इज टाइम टू राइट डाउन। तो जब आप लिखेंगे, you remember that like any other academic text, literature review should have an introduction, the main body and conclusion. आप कोई सिंपल ऐसे भी लिखते हैं, कोई आपने अपने स्टूडेंट डेज में, अपने कॉलेज डेज में, या जब आप स्कूल में थे तब भी आप कोई इंग्लिश का ऐसे लिखते थे, कोई हिंदी का निबंध आप लिखते थे. So in that essay, or even when you are writing the essay type questions in your examinations, what you do there, you write the introduction first of all, where you introduce the uh, topic, and then you write the main body, and then you conclude. Similarly, your review of literature chapter is also going to have mainly the three sections, that is the introduction, the main body, and conclusion, and I will make it more clear in the subsequent slides. Introduction. What is introduction? It is it should be able to clearly establish the focus and purpose of review of literature. It should introduce the topic. It is with respect to this area, several researches were reviewed and analyzed, and this is how I'm going to present it. This is the introduction. Then main body of the chapter. You can use subheadings for writing the main body of the chapter. And it can be theme wise, it can be period wise, it can be methodology wise. As you write, you can follow several steps. These steps can be summarized and synthesized, that is, give an overview of the main points of each source and combine them into coherent whole, and analyze and interpret, give your own interpretations wherever possible, and then discuss the significance of findings in relation to the review as a whole, and then critically evaluate, that is, mention the strengths and weaknesses of your sources. Then you will write the conclusion. In the conclusion, you should summarize the key findings you have taken from the literature and emphasize upon the significance, and you should be able to highlight, in this concluding para, you should be able to highlight the gap, research gap, and you should be able to highlight that why your study is important. So this is regarding the systematic review of literature. I would like to now show you one example that how this chapter is written. Let me share the screen for that. Okay. So is my screen visible? Is the audience with me? Can you hear me? Yes, ma'am. Screen aa raha hai. Okay. So students, I've taken this example where I have given the title. See, this research is on employee job satisfaction and service quality in organized retail sector of Punjab. This is the topic. See, if this is the topic, then this is the second chapter we are starting. Okay, we are starting the second chapter from here. Chapter 2 is review of related literature. Now, in this review of literature, as I told you, we have an introduction. Okay, so this introduction is this para, which says that the literature related to topic and objectives of research was studied.
The present study used a planned structure to assess the level of job satisfaction, determine service quality, and customer satisfaction. The literature pertinent to the study was extensively reviewed and has been presented under the following heads. So here the researcher is writing that I have taken up this topic, and in this topic, these are the relevant areas with respect to which literature was reviewed, and this literature, whichever was reviewed, is being presented in the following sections. So these are the sections which have been made by this thesis writer, by this researcher. 2.1, this section is level of job satisfaction. Service quality. 3 is employee job satisfaction and service quality. And next is influence of employee job satisfaction and service quality on customer loyalty. तो ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक के अंदर उसने जो स्टडी किया है उसको रिसर्चर ने 4 हिस्सों में बांट दिया है, 4 सेक्शंस में बांटा है। और शुरू में ही रिसर्चर ने इंट्रोड्यूस कर दिया कि मैं अपना रिव्यू ऑफ लिटरेचर ये 4 सेक्शंस के अंडर डिस्कस करने जा रही हूं। सो द फर्स्ट सेक्शन इज लेवल ऑफ जॉब सेटिस्फैक्शन। Now 2.1, first section has been taken up. Here the researcher has reviewed this article. This article is Nuruddin. This is the one. Okay, so this article, Nuruddin and Jusuf. Okay, so this article is there. Who are the writers? आपने एक आर्टिकल स्टडी किया, ये आर्टिकल के राइटर हैं, जो ऑथर हैं, 2 ऑथर हैं इसके अंदर। एक ऑथर का सरनेम है नूरुद्दीन, दूसरे ऑथर का सरनेम है जुसौफ। जब भी आप कोई आर्टिकल रिट्रीव करते हैं, जब भी कोई आप आर्टिकल स्टडी करते हैं, चाहे वो हार्ड कॉपी हो आपके पास अवेलेबल या आप ऑनलाइन सोर्स से देख रहे हैं, तो आपने पहली चीज जो है नोट करनी है कि आर्टिकल के ऑथर कौन से हैं। आर्टिकल के ऑथर, फॉर एग्जाम्पल Nuruddin, it can be Nuruddin, it can be Muhammad Nuruddin, for example, Muhammad Nuruddin and Peter Jusuf. These 2 authors are there. You will note down only the surname of the author. For example, you take my name, Pratibha Goyal, and for example, your professor, Mr. Jaiswal, K.S. Jaiswal, and Pratibha Goyal. We 2 persons, suppose we write an article, we get it published, and you are going to review that article. How will you write the review? What will you note down? And for example, Professor Jaiswal is the first author, and I happen to be the second author. Then you will note down Jaiswal and Goyal. When was this article published? This article, maybe it was published in 2020. So 2 things will come here. Here, in the paragraph form, you will write that a study was done related to job satisfaction, where the researchers found that it is, or you will write that it has been found that job satisfaction leads to improvement in productivity. And then in the bracket, you will write Jaiswal and Goyal, comma, 2020. Some universities have the style of putting comma after the writer's name, but some universities, they don't put comma. So here in my university, the style is Nuruddin and Jusuf, and without putting a comma here, straightway they write the year. And in the example which I have given you, it may be Jaiswal and Goyal, 2020. Okay, so this is how you will write the reference here. You will write the reference here. Then the same reference will go to reference writing section, which I will explain to you on 11th of January when I take the other lecture. So this is how you will write, and a few more examples will be there.
Okay. So that example was when you have written the text earlier. I take you to the previous example. Can you see the screen clearly? So here it is, to see the level at which employee is satisfied is very important. The commitment of employee towards organization, his performance and motivation depend upon job satisfaction. Now these two authors, they say that commitment of employee towards organization, his performance and motivation depend on job satisfaction. And I have not said this, Nuruddin and Jusuf has said this. So you have written the idea first and then you are writing the names of the authors. But sometimes you write the name of the author first. So how you have to write that when you are writing the thesis? Here, this is the example. This one, Bodur. This is the author, Bodur. Bodur is the name of the person who is writing this paper. So maybe his initials are Bodur JS. He is James Bodur. James Stephen Bodur. That is the complete name. But here in review chapter, you are going to write only the surname. So you will write Bodur 2002 because that is the year when the article was published. So here you are starting from the name of the author. So you will write Bodur 2002. Stated that there are some factors which are related to job satisfaction, that is work, substances, age, sex, educational level, workplace environment, location, colleagues, income, and timing of work. Okay, so I hope you understand. So here, Bodur is not, we are not putting it like this, that Bodur, I'm not doing it like this, Bodur. This is the wrong one. So the sentence in that case will be stated that it cannot be the beginning of the sentence. So therefore I write here that this author Bodur, and in the bracket I am putting the year Bodur, and I'm going to delete this bracket. So Bodur, in bracket I write 2002, stated that this, yeah. Then here two authors are there. It's not single author. When two authors are there, you will write like this. You will write Nuruddin and Jusuf 2009 found that job satisfaction is critical because it is a key to business success. Okay, so this is, in case two authors are there, you will write the word and between these two names. If more than two authors are there, then what will you do? You will write it all. This is, example is here. This one. This is the example. So here it is employee job satisfaction is the feeling of thoughts of employees about their work and place of work. In result, job satisfaction is all about satisfying one's needs in working place. And this is said by, this is found in a research paper which is written by Togia and several other authors. Many authors are there. So more than two authors. Many means more than two authors are there. So in case more than two authors are there, you will write the surname of the first author. Surname of the first author in this case is Togia. And rest of the authors, they are not mentioned here. And in that case, we write these two words, et, all, et al, and then we put the year, and et al is word, this et al. This is written in italics. Togia will be non-italic and et al will be italic, and this is how you are going to write. And if many papers, they are saying, they are giving the same idea. For example, we say that
job satisfaction, leads to increase in productivity, and several researches have found that. Then what will you do? You will write Anitha 2001, comma, Singh 2012, comma, then Kumar 2015, and Lalita 2020. So, okay. So the same idea or same thought or same finding has been given by 4 researchers, 4 research papers. They have given the same idea. They have given the same finding. So all the 4 will be placed here. Now, what can you do here? You can here, when you're writing these 4 papers, when you are mentioning, giving the reference to 4 papers here, you can write here in chronological order. आप सबसे पहले अगर for example, if this is not, this research is done not in 2012, let's say this is in 1999. In 1999, certainly it is before 2011, so we will put it here. Then first to be cited here, first to be written here will be Singh, and then you will write Anita, and so on. So is that clear? So this is how you will do it. Sometimes it depends upon what is the pattern being followed in your university. Sometimes they put semicolons also here. Sometimes we have, it is comma here. But sometimes what do? They put semicolons. Whatever you do, uniformity should be there. If you are writing comma, write comma everywhere. If you are putting semicolons, put semicolons everywhere. So this is how you can do. So this is clear when to write at all. Now this is the within that section. See, this is dealing with research on, this is the first section which we have taken up, level of job satisfaction. Now within that section, several subsections are there. This is benefits of, employee job satisfaction. This is the subsection. Now you will write on this. Then here starts the second section, service quality, and from the relevant literature with respect to service quality is mentioned here. See, this is the example I told you. Several authors are there. Now, what is this? This is customer satisfaction will automatically come if there is quality in the service being offered to them. From the past researches, service quality and customer satisfaction have been proved to be positively correlated. So here the researcher mentions, जो जिसका thesis है वो बता रहा है हमें कि पास्ट में ऐसी कई रिसर्चेज हुई हैं जिनमें सर्विस क्वालिटी और कस्टमर सेटिस्फेक्शन को पॉजिटिवली कोरिलेटेड बताया गया है, जिसमें ये फाइंड किया गया है कि अगर कस्टमर सेटिस्फेक्शन, अगर सर्विस क्वालिटी बढ़ती है तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन भी बढ़ जाती है. तो ये फाइंड किया गया है. तो ये किस किस रिसर्च के थ्रू पता चला? ये बेनेट एंड बारकेंसियो 2005, क्यूओ 2003, गेडे एंड सुमेडी 2013. ये 3 रिसर्चेज हैं जो हमें बताती हैं कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन एंड सर्विस क्वालिटी आर पॉजिटिवली कोरिलेटेड. Here the writer has made a little mistake. It should have been like this. ये जो 2003 वाला राइटर है, आप इसको अल्फाबेटिकली कर सकते हैं. Probably the writer, no, it is not. अल्फाबेटिकली कर सकते हैं, लेकिन इसको अगर आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रखेंगे वो ज्यादा अच्छा रहेगा. So it can be
like this. It can be QO, 2003 can come first. Yes. जी, I'm not able to hear. क्या आप repeat करेंगे? Please repeat your question. Shall I take your question or move further? So in this way, yes, in this way, this literature review chapter is being written. Other sections, they are mentioned, and then you have the conclusion. Okay, so this conclusion paragraph, generally this is missing. vote of thanks वाला करना In most of the researches, आप कई थीसिस जरूर उठा के देखेंगे तो कई बार ये जो है conclusion वाला पैरा वहां पे missing हो जाता है, but this is also a very important part of this chapter. So here you should write that this above literature review, it implies this is how the literature tells us these are the relations which have been determined. So here the writer says that above review of literature implies that most of the studies have been carried out to determine the relationships between these aspects. So many studies have shown that relationship between service quality and customer loyalty. Researchers have so far mainly analyzed the relationship between these two aspects, and this is how but most of the studies have been conducted in banking and insurance sectors only. In the retail sector, no research has been done, and particularly in my state, nothing has been done. So therefore, this research will be carried out in the state of Punjab. Review of literature, but I will like to highlight one point again here, that when you are doing review of literature, you are reading some article, you are reading some book chapter. If at all you find something which is related to your research area, don't forget to note it. आपको क्या क्या नोट करना है, आपको उसके अंदर क्या दिया हुआ है, क्या थॉट है, क्या मैथड है, क्या फाइंडिंग है, कौन से ऑब्जेक्टिव के साथ वो रिसर्च की गई थी, क्या उसका कंक्लूजन निकला, ये तो आपको नोट करना ही करना है. लेकिन इसके साथ साथ कुछ चीजें नोट करनी बहुत ज्यादा जरूरी है. नेम ऑफ द ऑथर, वो रिसर्च किसने की, वो आर्टिकल किसने लिखा है, कौन से जर्नल में पब्लिश हुआ, किस ईयर में पब्लिश हुआ, उसका वॉल्यूम क्या था, नंबर क्या था, उसके पेज नंबर्स क्या थे. तो ये चीजें आई मेंशन वंस अगेन, जब आप रिव्यू ऑफ लिटरेचर करते हैं, जब आप स्टडी करेंगे, तो आपको मेनली कौन सी चीज स्टडी करनी है, कौन सी नोट करनी है. आपको करना है नेम ऑफ द राइटर, ऑथर नेम, ईयर, title of the research, title of the research, then where it was published. Is it a book? Is it a journal? Is it a report? Is it a thesis? Is it published or unpublished? If it is published, where it is published? In case of book, who is publisher का नाम क्या है, पब्लिशर की प्लेस कौन सी है, कहाँ से पब्लिश हुई है वो बुक. अगर वो जर्नल है तो जर्नल का नाम क्या है, जर्नल का वॉल्यूम क्या है, उसका नंबर क्या है, चाहे बुक है, चाहे जर्नल है, चाहे रिपोर्ट है, चाहे वो अनपब्लिश्ड थीसिस है, उसके पेज नंबर्स क्या हैं. अगर वो थीसिस है तो थीसिस कौन से डिपार्टमेंट का है, कौन सी यूनिवर्सिटी का है, पब्लिश्ड थीसिस है या अनपब्लिश्ड थीसिस है. So this all has to be noted down,
And all this will be utilized in writing the references, and we shall be dealing with that in the separate topic later on. So that's all from my side. The session is open for questions, so you can ask the questions now. Hello, am I audible? Yes, you are. Okay, ma'am. Thank you, ma'am. If there is any question from the attendee side, he or she may ask by unmuting his or her mic. मुझे बीच में क्वेश्चंस स्टूडेंट्स को कोई आवाज नहीं आई. Students are very Actually, ma'am, students are in the attendee and they are actually muted. So if okay. there is any question, just raise your hand. There is an option of raising hand in for the attendee. Probably you can see them, not me. Okay. You can also write the question in the chat box also. So, ma'am, there is no any question. I think the session was very much elaborative and very much understanding by in itself. And I am here to just thank you so much. We are highly blessed that your distinct deliberation on various dimensions of systematic review literature, and it is no doubt a very important part of any research work. Unfortunately, we can say that it does not get due attention in the researchers in India, but it should be getting due attention. But your way of presenting this particular topic is very awesome, and we are actually blessed, and it is very much understanding. It was very much clear to us even, and I just saw that you have just explained in a very good manner, very practical way by explaining the research paper and very important key points that we should understand, we should just consider while writing our research paper or thesis writing. So, ma'am, once again, I am very much thankful to you, ma'am, for giving your nice deliberation to us. And in future, we will also have such type of deliberation with you. So I am also thankful to the convener of this workshop, Professor K.S. Jaiswalji sir, and co-convener of this workshop, Professor Ajit Kumar Shukla ji sir. And I am also thankful to the organizing team of this workshop and the research scholars who are actually attending this workshop. Might be they got benefited with this workshop. Thank you so much for joining us, and thank you so much, ma'am, for on behalf of my all the team, on behalf of my department, on behalf of my all the senior professors. I am highly thankful to you, and thank you so much, ma'am. Thank you for patiently Thank you so listening. much, ma'am. Thank you so much, ma'am. We can close the session, ma'am. Yes, how to close, Nayak, kindly guide me, or you can close it from your side. Just, ma'am, I can close it, ma'am. Thank you so much. Thank you.